Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Hello, welcome to your own show from your own channel Lifeline. आज खुशियां बटोरे, खुशियां बिखेरे, इसके अलावा या उससे आगे बढ़ के हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसके लिए? हम सब के लिए तो जरूर, मगर हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये और भी जरूरी है. मैं ये कहना चाहता हूं कि द वर्ल्ड इज फेसिंग द 6th मास एक्सटिंक्शन नाउअडेज. व्हाट आई मीन, मैं कुछ बता देता हूं पहले. मास एक्सटिंक्शन क्या है? हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं और फिर मूवीज में भी देखते हैं कि डायनासोर कभी थे दुनिया में और फिर वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए. कैसे? कुछ थियोरिस्ट या साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि दूसरे ग्रह से कुछ आया, धरती से टकराया और वो डिस्ट्रक्शन हो गया, या फिर ऐसी बीमारी हुई कि सब लोग मर गए, या फिर कोई और कारण रहा होगा. तो द लास्ट मास एक्सटिंक्शन, जिसमें दुनिया के लगभग 75% प्लांट्स एंड एनिमल्स, आई रिपीट, लगभग 75% मेजोरिटी, ह्यूज मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं किसी भी कारण से. ये आज तक 5 बार हुआ है. लगभग 660 करोड़ बरस पहले डायनासोर एक्सटिंक्शन हुआ था और इसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ एक्सटिंक्शन. मगर some researchers and scientists are saying the 6th mass extinction is going on. What is the reference? रेफरेंस ये है कि साइंटिस्ट्स बोल रहे हैं कि ये दुनिया 350 करोड़ लोगों के लिए ठीक है, उससे ज्यादा नहीं. मतलब देयर विल नॉट बी प्रेशर ऑन द रिसोर्सेस. खाना पीना, जमीन, इन सब के ऊपर रिसोर्स जो है उन पे प्रेशर नहीं गिरेगा इफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 350 करोड़ विच वॉज देयर इन द 70s. और आज कितना है? मोर देन 800 करोड़. एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट? जितने भी रिसोर्स हैं, खाना पीना रहना, सबके ऊपर प्रेशर आ रहा है. क्यों? क्योंकि हम जो है अंधाधुंध शहरीकरण कर रहे हैं, घर बना रहे हैं और जंगल काट के खेती कर रहे हैं क्योंकि हमें खाना चाहिए वगैरह वगैरह. तो उसमें क्या होता है कि दोज एनिमल्स एंड प्लांट्स जो कि हमारे जैसे शायद इंटेलिजेंट नहीं है और वो बोल नहीं पाते कुछ, वो मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं. दैट मीन्स 75% ऑफ द लैंड एंड 70% ऑफ द फ्रेश वाटर इज इन कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग. हम लोग दुनिया के ज्यादातर रिसोर्स से जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है वो अपने कब्जे में कर लिए हैं और बाकियों के लिए कुछ नहीं छोड़े. उन बाकियों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है और
मैक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, जैसे समंदर में ब्लू व्हेल भी है सबसे बड़ा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी के अंदर है या हवा में है या पक्षी है। तो उनके लिए चूंकि वो हम हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, वो जानते नहीं है ये, तो हम उनका भी पोर्शन, उनका भी रिसोर्सेस हम अपने दखल में ले रहे हैं, विच इज वेरी डेंजरस एंड विच इज हैपनिंग, एंड बिकॉज ऑफ विच साइंटिस्ट्स आर सेइंग कि बहुत फास्ट हजारों स्पीसीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विच इज कॉल्ड द 6th मास एक्सटिंक्शन। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम ये नहीं जानेंगे कि हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रक्शन होता जाएगा। अभी कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले या अभी भी चल रहा है कोरोना, जो कोरोना वायरस है, वो कहां से आया कोई नहीं जानता है। दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस। क्यों? क्योंकि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ रहा है इन ए डेंजरस वे, एंड द रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स इज वेरी फास्ट। पहले जो मास एक्सटिंक्शन होता था, या इससे पहले 5 बार जो हुआ है, वो बहुत स्लो मास एक्सटिंक्शन था, वो ग्रेजुअल था, बट नाउ ये एक्सटिंक्शन बहुत जबरदस्त हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? एज सेल्फ ग्रूम्ड इंडिविजुअल्स, हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, हमारे पोते और परपोते के बारे में सोचना चाहिए कि हम उन्हें कौन सा दुनिया गिफ्ट करके जा रहे हैं। दैट मीन्स वी मस्ट स्टॉप दिस ब्लाइंड डेवलपमेंट। हमने बहुत सारा शहर खुद देखा जहां पे लोग पेड़ पौधे लगाते ही नहीं है। पटना उनमें से एक है, बिहार का कैपिटल। अंधाधुंध घर बसाया जा रहा है, कंक्रीट का जंगल हो गया है। दिस वीडियो फ्रॉम लाइफलाइन इज अ फूड फॉर थिंकिंग। मैं ये फूड आप लोगों को देना चाहता हूं लाइफलाइन की तरफ से, ताकि थोड़ा सा हम सोचें। क्यों? बिकॉज वी कंसिडर आवरसेल्व्स और वी क्लेम दैट वी आर एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग, and if we are educated human being, we must give it a thought. एक हमने वीडियो कलेक्ट किया है आप लोग, प्लीज वॉच। Welcome parents. We are ready to begin. Kindly settle down. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water, but all the water had dried up. The world was now much hotter. So Jack and Jill sat on the hill. Their throats were so dry, they couldn't find a drop to drink. And one day, neither will I. मछली जल की थी रानी, जीवन उसका था पानी, पर पानी में प्लास्टिक फेंकते रहे हम, मछली को तरपते हुए बस देखते रहे हम। धीरे धीरे मर गई मछलियाँ सारी, रह गए बस फेंकी हुई चीजें हमारी। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the smoggy sky, I have never seen you. I wonder why. The smoke, it makes my chest so tight. For every breath I must fight. Mummies and daddies, आपके बचपन की फेवरेट पोएम्स बदल जाएंगी, क्योंकि हमारा बचपन क्लाइमेट चेंज की वजह से बदल रहा है। इससे लड़ने के लिए हम सबको चेंज होना पड़ेगा। Your very survival is dependent on a highly complex network of other species on Earth. You can breathe because plants, animals and bacteria regulate the atmosphere. You eat crops that depend on a climate and a water cycle that is regulated by forests. Humans depend on healthy ecosystems. Yet it's humans that have put all of this at risk.
pollution, climate change, and the exploitation of habitats and loss of biodiversity are playing havoc with ecosystems. Ecologists have been warning of a sixth mass extinction, and there's academic debate over whether that's already happening. What's very clear is the rate of extinctions is alarming. Of the estimated 8 million animal and plant species on Earth, 1 million are at risk of extinction. 3/4 of land and 2/3 of marine environments have been significantly altered by human actions. The populations of mammals, birds, amphibians, reptiles and fish shrank by 68% on average between 1970 and 2016. In short, animals are becoming extinct at the fastest rate in all of human history. It's alarming because human societies basically depend on there being a diversity of organisms and ecosystems out there. So the biodiversity crisis presents a threat to human societies. Humanity relies on a narrow range of species for food and resources. But those species are themselves part of a complex ecological web that can't be sustained without a much greater diversity of animals, plants and bacteria. Take tuna. We fish tuna, we eat tuna, but the tuna doesn't exist on its own. It's at the top of a huge food chain. Microscopic marine algae, called phytoplankton, are eaten by micronectin, like shrimp, which are eaten by smaller fish, which in turn are eaten by tuna. And that's just one chain of a much wider ecosystem. You need all of the stuff that the tuna eats throughout its life in order to get the tuna that you net at the end and that you serve on a dish. The biodiversity crisis may pose as great a risk to humans as climate change, but it gets far less attention. In many ways, those two crises are interlinked. The largest sink for carbon emissions is plants, soaking CO2 out of the atmosphere, turning it into plant material through photosynthesis. As we lose plants, we contribute to the climate problem. You can't solve the climate problem unless you solve the biodiversity crisis. How every species relates to everything else. One solution could be to develop better biodiversity models. Much like climate models, they would forecast the impact of changes to ecosystems. But addressing the loss of diversity will require funding and the support of governments. All the sensors in the world are not going to save a species from going extinct. You're going to need policies, and you're going to need humans on the ground to affect those policies. वेलकम बैक। थोड़ा सा आप लोगों को डराने की जरूरत थी, जो बीरा मैंने उठाया कि थोड़ा सा डरा दें ताकि हम सोचें। और सेल्फ ग्रूमिंग क्या कहता है कि पहले सोचना शुरू करिए प्रॉब्लम के बारे में, और फिर जैसी प्रॉब्लम आप समझ जाएंगे सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, और ऑटोमेटिक एक से बढ़ के एक सॉल्यूशन निकलता रहेगा। तो क्या हम अपने आप को ये विजन दें ताकि हम जब दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, सबको जाना है, वहां जाके ये कह सके कि हे ईश्वर, तुमने जिस दुनिया में मुझे भेजा था, मैंने उस दुनिया को थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश की। थैंक यू, ऑल द बेस्ट on your endeavor to make the whole world happy, apart from making ourselves happy. Wish you a very happy and relaxing Sunday, and wish you a very good week ahead from all of us at Lifeline. Thank you.